Okay, welcome back. After this morning session, we have studied the theory of torsion, the assumptions made, and the we solved few numericals, one or two numericals based on that. Let us continue with the same one. Continue with the same one. So, as you can see, question number 3. This small change in the problem, rest all is similar. A hollow shaft of diameter ratio 3/8 is required to transmit 365 kilowatt at 120 rpm. So that is similar. What we have is power is 365 kilowatt at an rpm and equal to 120 rpm is to be transmitted. Now, but there is some line which is added here. The maximum torque being 21% greater than the mean. What do you mean by this line? Can anybody tell me? The maximum torque being 21% more than the mean. Yes, anyone? सर एवरेज टॉर्क से ये मैक्सिमम टॉर्क 21% ज्यादा है. हाँ, तो what do you mean by maximum torque? And what do you mean by mean torque? Now, basically, let's say if we have seen any working of AC engine or any working of any simple locomotive engines. So all these engines, they have 4-stroke or a 2-stroke engines, right? So in this 4-stroke or 2-stroke, you know that there is only one power stroke, but rest all other are combustion and exhaust strokes are there, right? So that means ये जो power हमें मिलता है, RPM जो flywheel का जो RPM है, it is not constant. ठीक है, वो वेरी होते रहता है. ठीक, सिमिलरली टॉर्क भी वेरी करता है. ठीक है, मतलब अभी जब मैं इंजन गाड़ी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कोई हिल पे चढ़ना है तो व्हाट यू डू, वी ड्राइव एट लोअर गियर्स. तो लोअर गियर पे आरपीएम कम होता है बट टॉर्क ज्यादा होता है. हायर गियर्स पे ज्यादा ये है बट टॉर्क कम. तो जब हम लोग बोलते हैं कि पावर ऑफ द इंजन इज सो एंड सो, तो पावर से जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2π×60, दैट विल गिव मी द मीन और एवरेज टॉर्क. वो जो हमें वैल्यू मिलता है दैट टॉर्क इज मीन टॉर्क. ठीक है, बट जब मैं लोअर गियर पे होऊंगा, जब मेरा आरपीएम कम होगा तो मेरा टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा. तो वो टॉर्क, वो मैक्सिमम टॉर्क है. वो टॉर्क भी तुम्हारा प्रोपेलर शाफ्ट या जो ट्रांसमिटिंग शाफ्ट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, या वो कैपेबल होना चाहिए उतना मैक्सिमम टॉर्क लेने का, राइट? इफ यू हैव डिजाइन योर शाफ्ट एट द मीन वैल्यू ऑफ टॉर्क, देन इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जब ट्रांसमिट करेगा टॉर्क का, तो वो टाइम पे ज्यादा शियर स्ट्रेस आएगा और डिस्टॉर्ट हो सकता है. ठीक है, या फिर उसका जो अलाइनमेंट है वो मिसअलाइन हो सकता है. So therefore, we want always the shafts to be designed at its maximum level of torque. Okay. So therefore, it is given that a line is given that whatever the mean torque you are calculating, your maximum torque will be 21% higher than that. Okay. So this is we are going to take into consideration. So from these two parameters, I can simply calculate power is equal to 2πn. Now this time I will write down this as T mean, the mean torque upon 60. Now how much is the power given? That is 365 kilowatt. So I will write down 365 into 10 raised to 3 equal to 2 pi into RPM is 120 into mean torque upon 60. Can you calculate the value of T mean? Yes. सर बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही. तुम बैकग्राउंड वाला आवाज मत सुन, मेरा ही आवाज सुन. $29,045.77. 4 2.9 into 10 raised to 7 2.9 into 10 raised to 7 Newton mm millimeter. Okay, now you see here, if I take this torque in my calculation, I'll be calculating at a lower requirement, right? But when it is given that in this particular shaft the maximum torque when it is transmitted, so that time it is 21% higher. So we should always calculate calculate shear stress at the maximum torque. So therefore maximum torque is 21% higher. 21% higher means it is 1.21 times more. So 1.21 multiplied by
Everybody has understood this, why I am multiplying by 1.21, because 21% extra है. So 100 plus 21 is 121, divided by 100 करेंगे तो 1.21. So 1.21 times mean torque. Now this is important step. ठीक है, अगर कोई भूल जाता है ये step तो यहाँ पे your answers will be wrong. Diameters, whatever you calculate, will be wrong. Okay, so how much will be this? 1.21 into 2.9. How much? 3.51 into 10 raised to 7. 3.51 into 10 raised to 7. That is maximum torque. And we are going to calculate at this particular torque level. Okay. At this particular torque level. Yeah. So now, what is the next part? They have given it two conditions. The shear stress is not to exceed 66 meganewton per meter square, and the twist angle. So let us go for first condition. Condition 1, that is tau maximum. Okay, tau maximum is how much? 66 meganewton per meter square. So we want to convert this. 66 mega means 10 raised to 6 Newton, and meter to millimeter करेंगे तो भी 10 raised to 6 ही आएगा. So basically it is 66 MPa. Okay, no need to convert. So tau maximum is given as 66 MPa. Now you calculate. So we know T by J is equal to tau maximum by R, right? But now here it is given that you see the ratio of the diameters. So 3 by 8. What is 3 by 8 here? What is 3 by 8? So the outer diameter, Inner diameter. inner diameter upon outer diameter. The inner diameter upon outer diameter is 3 by 8, and therefore the inner diameter is 3 by 8 times the outer diameter. Okay, so that I will be using it here. Torque value is 3 point. Now here I will be going for maximum torque, right? So torque maximum is 3.51 into 10 raised to 7 divided by J, which is pi by 32 d O raised to 4 minus di raised to 4 equal to tau maximum is 66 upon that is do by 2. So here how we can do it? This is 3.51 as it is into 10 raised to 7 divided by pi by 32 do raised to 4 common लिया 1 minus 3 by 8 raised to 4. 1 raised to 4 तो 1 ही होता है इसलिए 1 and is equal to 66 by d naught by 2. So यहाँ पे एक d naught कैंसिल हो जाएगा, d क्यूब बचेगा, d naught क्यूब बचेगा, and ये 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 16 बचेगा. ठीक है, so we will get d naught cube as 16 multiplied by 3.51 multiplied by 10 raised to 7 divided by pi into 66 into 1 minus 3 by 8 raised to 4 this way. So you will calculate d naught cube and then you will get d naught ka value. What is the answer? 176.79. 76.79. 176.79. Let's say it is 8. Okay, this much is the outer diameter which we get. Now we will solve by using condition number 2 also. Condition 2 is about your twist angle. You can see the twist angle should not exceed by 1.5 degree, 1.5 degree, and it should be less than 3 meters. The angle, the length should be 3 meters. So length is 3 meter. So we will write down it is 3000 millimeter, and the angle of twist is 1.5 degree. So that is how much? Sir, D naught 140.32 आया. 140.32. Okay, हाँ ये बताओ 1.5 into 0.017. 0.0261. 0.0261 261 radian. Okay, so now we can use the same formula. T maximum by J is equal to G theta by L. So it is 3.51
10⁻⁷. अभी मैं j को डायरेक्टली लिखता हूँ, π/32. d0⁻⁴ तो कॉमन आएगा, 1 - 3/8⁴, right, is equal to this g. What is the g value? You can see here 87 giganewton per meter square, millimeter square. Giga means 10⁹ और millimeter में करेगा तो 10⁶. तो ये बचेगा 87 into 10⁻³ MPa into theta is 0.0261 upon L is 3000. तो ये 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है. Okay, so you will calculate the diameter d0. Again, tell me the answer. Yes. How much? $148.16. 48.16. 148.16, okay. 148.16 or 108, fine. So mm. So this is your answer. So now as you can see, out of these two, the larger one is 148.16. So therefore, we will write down. Okay. So the diameter d0 equal to 148.16 can be selected. Now if this is this much, then di will be 3/8 times 148.16. How much? 55.56. 55.56. Okay. So we got this as my answer. So this is a simple, only one part we have added here. That is the, what do you mean by your maximum torque and mean torque? Okay. By default, whatever we calculate by this formula, it is the mean value. Okay. But if they have not given this kind of conversion from mean to maximum torque, then we will assume simply that mean as a maximum value. And for that, now देखो हर केस में ये mean ही रहेगा ऐसे जरूरी नहीं होता. For example, I can have a constant speed engine. If there is a constant speed engine, speed change नहीं होगा, torque same रहेगा. But if there is a variable speed engine, for example जैसे geared engine होता है हमारा automobiles, उसमें हम लोग speed change करते हैं. Speed कम करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, torque बढ़ेगा, right ना? So therefore, for such engines or such applications जहाँ पे speed और torque change होने वाला है, वहाँ पे maximum और mean का value आता है. Otherwise, for constant speed engine, there is mean and maximum same thing. There is no change in the torque as well as. Okay. Next. Yeah. So now this small. This again a little bit different type of sum. A solid circular shaft we have 50 mm diameter is to be replaced. Now we are continuing using a solid circular shaft, but it is now to be replaced. To be replaced by a circular tube. Okay, by a circular tube. If the outside diameter of the tube is known, मतलब हमें outside diameter पता है कि 75 is the limit. उसके ज़्यादा मैं जा नहीं सकता. 75 mm मैं use कर सकता. What must be the thickness? What must be the thickness of the tube if both shaft and the tube are made up of same material? If both shaft and the tube are made up of same material and same permissible stress. Also determine the ratio of weights for the two shaft. मतलब अगर मैंने बदली कर दिया solid के बदले hollow डाल दिया तो कितना weight में मेरा कम आएगा वो भी हमें find करना है. That is why we want to find out the ratio of weights also. Okay. So how will you do? How you can start with this? Anyone get any guesses?
सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दिया है 50 mm डायमीटर है उसका एक्सटर्नल, मतलब अगर हॉलो में कन्वर्ट करना है तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, इंटरनल नहीं दिया। कैसे करेंगे? Yes, any idea? सर दोनों शाफ्ट हॉलो वाला और सॉलिड वाला दोनों सेम मटेरियल और सेम परमिसिबल स्ट्रेस से बनाया हुआ है सर। तो जो उसमें जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो जो बेसिकली दोनों का रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों शाफ्ट सेम टाइप का टॉर्क ट्रांसमिट करने चाहिए, राइट ना? जो टॉर्क हॉलो सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट करेगा उतना ही टॉर्क हॉलो को भी करना है, ठीक है ना? एप्लीकेशन सेम है ना, हमने एप्लीकेशन चेंज नहीं किया, हमें खाली रिप्लेसमेंट करना है। सो द टॉर्क विल नॉट चेंज हियर, अंडरस्टैंडिंग इट? वो यहाँ पे लिखा नहीं है बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज टू बी रिप्लेस्ड बाय हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। मतलब क्या, एप्लीकेशन सेम है, टॉर्क सेम रहेगा, ओनली तुम्हें शाफ्ट रिप्लेस करना है एंड वेट रिडक्शन होता है क्या देखना है। सॉलिड के बदले अगर हॉलो यूज करे तो कितना वेट में फर्क आएगा, क्योंकि ये जो शाफ्ट होता है ये सब पर केजी मतलब मार्केट में उसका पर केजी रेट होता है। अगर शाफ्ट का वेट ज्यादा है तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट ज्यादा होगा, मटेरियल भी ज्यादा, मशीनिंग कॉस्ट भी ज्यादा। ओके, सो देयरफॉर हमें वेट रिडक्शन कितना मिलेगा वो फाइंड करना है, बट एप्लीकेशन सेम है। तो देयरफॉर आई वांट टू हैव द टॉर्क सेम। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड कि सॉलिड शाफ्ट है, इसका डायमीटर दिया है। तो सॉलिड शाफ्ट के लिए मैं कैपिटल डी यूज करूंगा, कैपिटल डी डायमीटर जो दिया है 50 mm। ओके, तो मुझे बताओ टॉर्शन इक्वेशन में हमने इतना तो पढ़ा है कि टॉर्शन इक्वेशन में tau by for solid shaft it is 50 mm and I am writing, let me write down for hollow shaft, for hollow shaft what is d outside is 75 mm, ठीक है? now d inside is the question mark, ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अभी देखो, as the application remains same, how will I start? I know that the torque transmitted by hollow shaft will be same as torque transmitted by solid shaft, ठीक है? टॉर्क ट्रांसमिट, अभी टॉर्क का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा? यस, see here, what else is given? What must be the thickness of if the both shaft and tube are of same material with same permissible stress? The permissible stress is same, मतलब यहाँ पे tau maximum के टर्म्स में वैल्यू लिख सकता हूँ। तो we know that, but we know that T by J is equal to क्या होता है? Tau by R. T by J is equal to tau by R. तो यहाँ पे torque is equal to क्या आएगा? J into tau by R. तो देखो दोनों शाफ्ट्स में ये जो tau है shear stress, this is same, right ना? तो therefore क्या चेंज होने वाला है? उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उसका R, that is outer diameter by 2, right? So अगर मैं इसके हिसाब से ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो what I am going to get is, see here, for hollow shaft I will write down polar moment of inertia for hollow shaft into tau, which is same, and the radius for hollow shaft, that is equal to J for solid shaft tau upon radius for solid shaft. Okay, so now ये तो कैंसिल हो गया। What is J for hollow shaft? So it is pi by 32 d naught raised to 4 minus di raised to 4, okay, upon what is this is d naught by 2, d naught by 2 बराबर ना? एंड सॉलिड शाफ्ट के लिए pi by 32 कैपिटल D raised to 4 अपॉन कैपिटल D by 2। ये by 2 वाला by कैंसिल हो गया, यहाँ पे pi by 32 कैंसिल हो गया। What I am going to what is left out is D naught, but D naught is known to us 75 mm, so 75 raised to 4 minus di raised to 4 upon 75 is equal to, ये कैंसिल होकर यहाँ पे d क्यूब बचेगा और d क्यूब का वैल्यू कितना है? d is 50 क्यूब। तो see here only one unknown is there, di, and can you get the value of di? 68.7. 60
8.7. mm. Okay, so we got this. Now what is the second part? By doing so, what we have achieved, how much weight we have achieved, how much weight is this. So we need to find out the ratio of weight. So let us take the ratio of weight of solid shaft upon hollow shaft. Okay. Hollow shaft or solid shaft. So weight क्या होता है? What is weight? Mass into gravity. बराबर ना? तो ग्रेविटी तो छोड़ दो, मास का रेशियो लिया तो भी चलेगा. वेट का रेशियो मतलब मास का रेशियो. तो मास किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, अभी दोनों मटेरियल सेम है इसलिए डेंसिटी सेम. ठीक है, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे m into g for hollow and m into g for solid. g कैंसिल, g तो सेम रहता है दोनों के लिए. ठीक है, मास ऑफ hollow, so it is density into volume of hollow shaft, density into volume of solid shaft. Density भी सेम है because it is given as same material, right? ना वॉल्यूम. अभी देखो दोनों का शाफ्ट अगर फिक्स करूंगा मैं तो लेंथ भी सेम ही रखना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट है, so therefore length is also same. So what is volume? It is area for hollow shaft into length multiplied by area for solid shaft into length. So length also cancels. So basically we have to find out the ratio of area of hollow shaft upon area of solid shaft. Simple. What is area of hollow shaft? Pi by 4 into d naught square minus di square divided by pi by 4 into capital D square. ये pi by 4 cancel. So what is that? 75 square minus 68.7 square divided by 50 square. How much is this answer? 0.36. 0.36. 0.36. So here जो hollow shaft है वो only 36% of weight of that of solid shaft. मतलब हमने कितना परसेंट weight कम किया? 64% of weight is reduced by replacing it with the hollow shaft. Are you understanding? ये weight का ratio से हमें क्या पता चलता है कि so therefore percentage weight reduction कितना हुआ? Is 1 minus 0.36, which is 0.64, and that is 64%. Okay, so is your question complete? No, they are asking you to find out the thickness. Right now, what is the thickness? 6.3 mm. So the thickness T is equal to क्या होना चाहिए वो? It is d naught minus di by 2. बराबर ना? So it is 75 minus 68.7 divided कितना आता है ये? 3.15. 3.15. Okay, understood? Yes? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now let us go for the next part. Yeah. So now the next question is about the connected shafts. Now see here. There are two solid shafts. AC and BC, as you can see in the diagram. AC and BC. AC, they are rigidly fastened to the both the end. दोनों end पे उनका fixed है. दोनों ends fixed है. Okay. Fastened together at C, and दोनों को C point पे joint junction है उनका. And the rigid supports at A and B. AC is of 75 mm in diameter and 2 meter in length, and BC is of 55 mm in diameter and 1 meter in length. You can see वो तो diagram में ही दिख रहा है सब कुछ. अब खाली last का line important है हमारे लिए. A torque of 200 Newton meter is applied. देखो मैंने torque applied किया है ये direction में ऐसे, right ना? वहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? हाँ, अभी तुम्हारे केस के लिए वो ऐसा रहेगा. ठीक है, ये direction में वहाँ पे torque apply किया हुआ है. So 200 Newton meter का at the junction. Compute the maximum shear stress in each material. दोनों material में कितना shear stress आएगा and angle of twist कितना आएगा. Okay, अभी इससे whether the shafts in series or parallel ये हमें identify करना है.
ऑलवेज रिमेंबर शाफ्ट सीरीज में कब होता है और पैरेलल में कब होता है। तो जब थीटा सेम रहेगा, सी हियर मैं यहाँ पे येलो कलर से लिख के रखता हूँ, इफ थीटा अगर सेम है okay, if theta is same the shafts are in parallel, okay, and if torque is same क्या हो जाएगा, सीरीज। तो अभी यहाँ पे देखो जंक्शन है, रिजिडली फिक्स्ड है सी पे, तो जितना भी ट्विस्ट एंगल ए बी में एसी में आएगा सी एंड पे, उतना ही बीसी में सी एंड पे आएगा। मतलब जो थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट मैं एसी के लिए देखूंगा उतना ही क्या रहेगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट किसके लिए रहेगा, बीसी के लिए भी रहेगा एट जंक्शन सी। जंक्शन सी तो फिक्स्ड है ना, एक ही है ना, तो जितना वो टर्न करेगा उतना ही बीसी वाला शाफ्ट भी उतना ही ट्विस्ट होगा, बराबर। वो अलग अलग नहीं हो सकते बिकॉज वो फिक्स्ड है वहां पे, गेटिंग इट। सो अभी हमें वो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, सिंपली लेट अस सॉल्व नाउ। Okay, now see here, the very first thing what we can do here is we know that whatever the torque हमने यहाँ पे अप्लाई किया, देखो अगर तुम बीच में टॉर्क अप्लाई करोगे तो उसका रिएक्शन दोनों एंड्स पे आएगा, मतलब because of this particular torque which is applied in this direction, यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क आएगा। ये अगर ऐसा टॉर्क अप्लाई किया है वहाँ पे तो अभी ये उल्टा टॉर्क आएगा। Here there will be this kind of torque and here also there will be this kind of torque रिटर्न आने वाला। ओके, और एल्स मैं थोड़ा उल्टा ड्रॉ करता हूँ। ऐसे, ओके, तो वो टाइप का टॉर्क यहाँ पे, लेट अस से दिस टॉर्क वी आर कॉलिंग इट एज TA एंड दिस टॉर्क वी आर कॉलिंग इट एज TB, बट ये दोनों का एडिशन कितना रहेगा, इसके इतना रहेगा, बिकॉज समेशन ऑफ, अगर ये फिक्स्ड है तो समेशन शुड बी इक्वल टू 0। So we know that simple, but we know that summation of the torque should be equal to 0. So therefore the torque TA plus TB okay, so TA plus TB is equal to कितना होना चाहिए, whatever the torque we have applied which is 200 न्यूटन मीटर, राइट ना, 200 न्यूटन मीटर, TA plus TB इतना होना चाहिए। now we know that कि ये TA के वजह से शाफ्ट वो भी ट्विस्ट होने वाला है और यहाँ पे भी ट्विस्ट होने वाला है, बट we know that कि वो फिक्स्ड होने के वजह से थीटा the angle of twist for AC section will be same as theta angle of twist for BC section, right, at junction C। जंक्शन सी पे वो क्या है, एट जंक्शन सी दोनों सेम है। ओके, नाउ अगर दोनों सेम है तो दोनों के लिए फॉर्मूलाज लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं रफ में लिखता हूँ। पहले हमारा फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, T by J इज इक्वल टू G थीटा बाय L, पहले तो बराबर ना। तो अगर मुझे थीटा का फॉर्मूला लिखना है, व्हाट इज थीटा, इट इज T into L by G into J, बराबर है, G into J। So let us write down, so therefore I know that theta for AC is equal to theta for BC। so what is AC के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, AC एल्यूमिनियम है, you can see here एल्यूमिनियम, तो it is torque for aluminium, but torque for aluminium कितना है individual, it is TA। so I will write down TA into the length of aluminium is 2 meter divided by G for aluminium is how much, 3 into 10⁴। देखो मैं कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहा बिकॉज ये रेशियोज है तो कैंसिल आउट होने वाला है यूनिट्स, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड J फॉर एल्यूमिनियम, अभी एल्यूमिनियम का J कितना आएगा, पाई बाय 32, कितना डायमीटर देखो कितना है 75 है, तो इट इज पाई बाय 32 into 75⁴, दैट इज इक्वल टू थीटा फॉर BC मतलब TB मल्टीप्लाई बाय
the length is 1 meter divided by the steel के लिए कितना है 9 into 10 raised to 4 multiply by pi by 32 into diameter is how much 55 raised to 4. Okay, now from here pi by 32 cancelled, 10 raised to 4 cancelled, this 3 1 the 3 3 the. Okay, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 times TA divided by 75 raised to 4 is equal to TB divided by 3 into 55 raised to 4. Now you will get some value of TA in terms of TB. Get that value TA in terms of TB. Zero point five seven. 0.57. 0.57. So once you know, let us say this is equation 2. Earlier we have one equation, right? So from 1 and 2, अगर मैं लिखा यहाँ पे कि TA plus TB का वैल्यू है 200, इसमें से TA 0.57 है, ये हो जाएगा 0.57 TB plus TB is equal to 200. So how much is TB? It is 200 divided by 1.57. How much? 127.39. 127.4 लिखते हैं किलो न्यूटन, सॉरी किलो न्यूटन है न्यूटन मीटर का. So therefore दूसरा आंसर कितना आएगा फिर? If you know TB, you can TA is equal to 0.57 times TB. So 0.57 into 127.4. How much? 72.61. 72. 0.61. 72.61. ओके ठीक है 61 न्यूटन मीटर. सो हमें TA एंड TB मिल गया. अभी क्या कैलकुलेट करना है? दे आर आल्सो आस्किंग यू टू कैलकुलेट shear stresses in मतलब हमने TA TB तो फाइंड किया, shear stresses in each material. How will you find out shear stress in each material? तो अगर मैं shear stress AC में फाइंड करना चाहता हूँ तो देखो T for AC torque is this, J for AC section is equal to shear stress tau for AC section upon R for AC section. So you know the torque now this. ठीक है, ये J वैल्यू तुम्हें पता है pi by 32 लिख के. Let us substitute now. What is TA का वैल्यू? It is 72.61 into 10 raised to 3 लिखना पड़ेगा because मिलीमीटर में चाहिए. J is pi by 32 into कितना है डायमीटर AC सेक्शन का 75 raised to 4 is equal to what is this tau हमें फाइंड करना है, right? And R कितना है 75 by 2 बराबर ना 75 by 2. So from here you will get tau for AC section. ठीक है, सिमिलर वे में T for B, J for BC section into is equal to tau for BC section upon R for BC section radius. Okay, here also 72.61. Sorry, not 72. TB का वैल्यू अलग है. It is 127.4 into 10 raised to 3 मिलीमीटर में चाहिए इसलिए pi by 32 into 55 raised to 4 is equal to tau BC is your unknown upon 55 by 2. Get the answer for TA at both the shear stress. Basically this is AC मतलब ही क्या है shear stress in aluminium and ये BC मतलब है shear stress in steel. कितना आता है आंसर बता? 0.7 आता है एल्यूमिनियम. Aluminium is 0.7. 876. 0.876. 876 MPa. And how much is steel? How much is steel? Yes. 3.89. 3.899.
Okay, this is also done, but still the problem is not completed. They are also asking you to find out what is the angle of twist at this section. तो अभी यहाँ पे TA का वैल्यू पता है, तो you can solve either left hand side or right hand side to get this angle of twist, right ना? तो कोई बड़ी बात नहीं है, just give me the value of angle of twist. Just substitute all these values here. हाँ, बट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, ये तो ऑलरेडी एमपीए में, ये भी खाली टीए का वैल्यू मिलीमीटर न्यूटन मिलीमीटर में डालना पड़ेगा, मतलब इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। एंड ये जो लेंथ लिखा था हमने उसका वैल्यू 2000 लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो मिलीमीटर में चाहिए, तो ही हमें थीटा का वैल्यू रेडियन में मिलेगा। ओके, गिव मी द वैल्यू ऑफ थीटा। है 1.88 into 10⁻⁻². 1.88 into 10⁻⁻². 1.88 into 10⁻⁻⁴ radian. 5. Can you convert it to degree? So 10⁻⁻². डिग्री में करने के लिए 180 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय पाई। ये 1.88 वाला थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, आंसर यहाँ पे थोड़ा अलग है, जरा चेक करोगे। 1.55 into 10⁻³ दैट इज करेक्ट, 1.55 into 10⁻³ एंड उसका रेडियन में डिग्रीज में 0.089. okay, 0.089 degrees, so it is almost 0.09 degree, मतलब 1 डिग्री के पास में है, 11 मिनट्स का। ओके, नहीं डिग्री में, हाँ मिनट्स में दिया। ओके फाइन, 0.89 155 ना, हाँ 17 पे 1 डिग्री होता है, तो 15 पे ऑफ कोर्स 1 डिग्री से कम आएगा, दैट इज करेक्ट। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ लेट्स गो Yes, to sir. the next important question. Let's go for the yeah, welcome back. So now here we are having 3 different shafts, A, B, B, C, C, D, and they're asking you to find if you apply a torque at C. If you apply a torque at C, there will be reactions at A and D that we have shown. Okay, अभी देखेंगे कैसे होता है। इसमें मैंने क्या किया, C पे if I apply a torque C पे, तो AC एक शाफ्ट बनता है, CD एक शाफ्ट बनता है, बट C पे टॉर्क अप्लाई करेंगे तो इधर जो थीटा रहेगा वो तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो सेम रहेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा कि थीटा AC इज सेम एज थीटा CD, एंड थीटा सेम है और टॉर्क का एडिशन हो रहा है, इसलिए AC एंड CD ये जो शाफ्ट है वो पैरेलल में, बट AC एक कंपोजिट शाफ्ट है, AC 2 शाफ्ट से बना हुआ है। तो अगर मैं AC की बात करूंगा तो वो एक AB है और दूसरा BC है। दिस इज वन इज AB एंड अदर इज BC, बट AB एंड BC में यहाँ पे देखो, इधर टॉर्क तो खाली इधर लग रहा है, टॉर्क इधर लग रहा है, उसका रिएक्शन टॉर्क दूसरे एंड पे है, एक साइड पे एक एक्टिंग टॉर्क है, दूसरे एंड पे रिएक्टिंग टॉर्क है, बट यहाँ पे ये जो बीच उनका जंक्शन है वहाँ पे थीटा अलग अलग, थीटा जो होने वाला है वो BC और AB के लिए सेम नहीं रहेगा, राइट, बिकॉज जो एक्शन है वो C पे आ रहा है और उसका इफेक्ट A तक जा रहा है, तो जहाँ पे थीटा कम कम होते जाएगा, सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग मोमेंट C पे रहेगा, ट्विस्टिंग एंगल C पे रहेगा, देन वो कम कम हो जाएगा, मतलब B पे AB और BC का twist angle will be different. So here what I can say that the torque in AB and torque in BC is same, but theta is different. जो भी टोटल थीटा है ना ये AC पे लिए जो भी है वो होगा summation of theta for AB
प्लस थीटा फॉर बीसी, मतलब ये शाफ्ट का ट्विस्ट एंगल और ये ऐड होके इधर टोटल थीटा एसी मिलेगा. Okay, so therefore we can say that the shafts AB and BC are in series. Understood now? Shaft AB and BC are in series. कैसे समझ में आता है हमें सीरीज में है पैरेलल में कि थीटा सेम है तो पैरेलल में, थीटा फिर अलग अलग है तो सीरीज में. तो देखो मैं एसी की बात करूं, पूरा एक एसी और सीडी तो दे आर इन पैरेलल, बट एसी खुद दो हिस्से बना है ए बी एंड बीसी, तो वो खुद अंदर सीरीज में. सॉल्व कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, वी हैव वन इक्वेशन कि थीटा सेम है एसी और सीडी के लिए. ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका सबका ना पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, बिकॉज हर बार π/32 लिखना पड़ेगा एंड दैट बिकम्स डिफिकल्ट. सो लेट अस टेक पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एबी शाफ्ट. कितना होगा π/32 into how much 40⁴. ठीक है. BC शाफ्ट π/32 30⁴ and CD shaft π/32 into 50⁴. चलो तो ये सबका वैल्यूज बताओ फटाफट. फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 251327, मतलब 2.5 into 2.51 into 10 to the power 5. 5. Okay. Next 79.52 into 10⁵ क्या 7.95 7.95 into 10 into 10⁴. 4. ओके ठीक है. नेक्स्ट 6.13 6.13 10⁵ 5. ओके ठीक है. mm⁴. सबका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल के रख दिया. ओके नाउ बीसी शाफ्ट के लिए, अभी देखो ये बीसी शाफ्ट के लिए टॉर्क क्या है, टॉर्क फॉर एबी एंड टॉर्क फॉर बीसी इज नथिंग बट दैट टीए. ये जो टॉर्क है ना ये, और सीडी शाफ्ट के लिए टॉर्क है हमारा टीडी. ठीक है, दोनों का एडिशन मिला के टोटल टॉर्क है टी. ये तो हमें पता है बराबर. तो अभी ओके सो एक रिलेशन तो हमारे पास है कि TA plus TD is equal to T. Now let us try to get what can be the value of TA and what can be the value of TD, or is there any relation between them, so that हमें वो दोनों values मिलेंगे and then we can find out whatever it is asked. Okay तो अभी देखो हमें दिया है permissible shear stress दिया हुआ है. ठीक है तो मैं क्या करता हूँ, let us talk for BC first. shaft BC शाफ्ट बीसी के लिए ये देखो बीसी शाफ्ट है, टॉर्क क्या है इस टीए. शाफ्ट बीसी के लिए टॉर्क कितना है टीए. शाफ्ट बीसी के लिए हमें शियर स्ट्रेस भी पता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस. मुझे बताओ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा. यस जो सबसे वीकर सेक्शन है बराबर. Yes, sir. कौन सा वीकर सेक्शन है, बीसी है, इसलिए मैंने बीसी लिया है. ठीक है सबसे वीकर सेक्शन परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया है, तो मैं बीसी के लिए लिखता हूँ फॉर्मूला टॉर्क बाय जे बीसी इज इक्वल टू टाउ बाय आर. बट अगर ये बीसी के लिए लिखता हूँ तो ये सबके लिए मुझे बीसी का वैल्यू चाहिए, आर फॉर बीसी एंड टाउ मैक्सिमम. ओके नाउ व्हाट इज द टॉर्क, इट इज नथिंग बट टीए. देखो बीसी का टॉर्क इज नथिंग बट टीए upon what is J for BC, it is 7.95 into 10⁻⁴ कितना है वो 4 equal to what is tau maximum 30 MPa. what is RBC 15 ना, 30/2 15 होता है, यहाँ पे diameter 30 है. ठीक है तो can you solve this, how much you'll get 159 into 10⁻³ 159 into 10⁻³ 10⁻³ Newton millimeter.
और एल्स वी कैन राइट डाउन 159 न्यूटन मीटर। हमें दोनों में आंसर लिख के रखा है मैंने, जैसे काम आएगा वैसे यूज करूंगा। हाँ चलो ये भी मिल गया। अभी हमें क्या बचा फाइंड करने के लिए? TD बचा। हाउ टू गेट दिस TD टॉर्क? तो उसके लिए मुझे कौन सा ये देखना पड़ेगा? जंक्शन सी पे आई नो दैट कि थीटा सेम है, जंक्शन सी पे थीटा सेम है। व्हाट इज दैट इक्वेशन? कि थीटा फॉर AC इज सेम एज थीटा फॉर CD, बराबर ना? और तुम्हें पता है तो मैंने थीटा का फॉर्मूला कैसे लिखा था? सी हियर आई विल राइट डाउन दैट वंस अगेन। हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है कि T/J इज इक्वल टू G थीटा बाय N, बराबर? तो व्हाट इज थीटा फ्रॉम हियर? फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल टू T into length divided by J into G. Okay, so for AC section, right? Yeah. Okay, ठीक है। Theta AC is equal to theta CD. Now see here, what is theta AC? What is theta AC? We have written already. AC अकेला शाफ्ट नहीं है ना, दो शाफ्ट है, दो शाफ्ट के लिए थीटा ऐड होने वाला है, तो दैट इज थीटा AC is nothing but theta AB plus theta BC, and that has to be same as theta CD, right? What is theta AB? तो ये फॉर्मूला के हिसाब से इट इज टॉर्क फॉर AB। अब AB के लिए टॉर्क है मतलब TA into length of AB. What is the length of AB? 1000 meter, millimeter. 1 meter है ना, 1000. What is J for AB? It is 2.51 into 10 raised to 5 into what is G for AB? अभी G सबके लिए सेम है तो मैं इसको G लिखता हूँ, प्लस what is BC के लिए? BC के लिए भी क्या है? देखो टॉर्क तो वही है सेम TA, बिकॉज वो दोनों सीरीज में है। Here also it is TA. BC का लेंथ है 500 mm, ये 500 अपॉन BC का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 7.95 into 10 raised to 4 into G is equal to CD के लिए। CD के लिए क्या है हमारा? देखो CD के लिए, CD इधर है, CD के लिए टॉर्क क्या है हमारा? TD, I'll write down TD, okay, into what is CD का लेंथ 1.25, so it is 1250 mm में। J for CD is 6.13 into 10 raised to 5 and G again। तो ये देखो G सब में है, वो कैंसिल होने वाला है, बराबर? वो तो कैंसिल होगा। तो अभी बचा क्या? ये दोनों में से TA का वैल्यू भी हमें पता है। What is the value of TA? 159 into 10 raised to 3. So let us substitute that 159 into 10 raised to 3, ठीक है? अगर मैं वो कॉमन लेता हूँ तो बचता क्या है? 1000 अपॉन 2.51 10 raised to 5 प्लस 500 अपॉन 7.95 10 raised to 4 is equal to TD into 1250 upon 6.13 10 raised to 5, ठीक है? ये अभी सिंप्लीफाई करोगे तो एक ही आंसर है यहाँ पे, अननोन TD. Give me the value for TD. I have the answer here. 3.59 into 10 raised to 5. I'm having something different answer. 801.56. न्यूटन मीटर और मिलीमीटर में आएगा into 10 raised to 3, ठीक है? Then you will get the total torque is equal to TD plus TA. देखो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, राइट? You will get 801.56 प्लस हमारा जो पहले था 159, वो ऐड करो 801 लिखना चाहिए था ना, सॉरी। एट 801.56 प्लस 159 कितना आता है? It will be 960. 9.56 न्यूटन मीटर।
So this is the maximum torque which you can apply at point C. This is a type of question which you can ask, which you can expect in exam for 10 marks. Understood? Yes or no? Yes. So सर वो देखो टी ऑफ बीसी की यहाँ पे टी ऑफ ए लिखा था, वो पार्ट मिस हो गया मेरा, वो एक्सप्लेन करो ना एक बार सर। what शाफ्ट ऑफ बीसी में। अच्छा वो देखो दोनों शाफ्ट के ऊपर अभी जो एबी एसी एक जो शाफ्ट मैंने पहले लिखा था वो एसी दो शाफ्ट से बना हुआ है, एबी प्लस बीसी, पर दोनों पे सेम टॉर्क है एंड थीटा अलग अलग है। ठीक है, तो वो टी ए भी लिखो टी बी सी, ये जो टॉर्क्स है दोनों के वो सेम है और उसका वैल्यू है टी ए। देखो ना वो दूसरे एंड पे कितना टॉर्क है, रेजिस्टिंग टॉर्क टी ए है ना, तो दोनों टॉर्क Yes. सेम रहेगा टी ए, बिकॉज वो सीरीज में टॉर्क सेम रहता है, तो देयरफॉर टी ए लिखा मैंने उसको। और जो थीटा था उनका थीटा ए सी जो टोटल है वो होगा थीटा ए बी प्लस बी सी, मतलब सी सेक्शन पे जो एक्चुअल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा ना, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ए बी प्लस बी सी। यस सर। तो वैसे लिखा है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आएगा ना तो यहाँ पे इक्वेशन पे क्या सब्स्टिट्यूट करने का हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा। ओके ओके, so with this we have finished with the shear stress due to torsion as well. Now in the next class we will be going about the next chapter, that is, I can not think, but let's see, most probably the thin shells, or else the important chapter like for principal stresses or strains. Let's see how much the time permits and how